I hope you all can see my screen. Yes, Vishali, I can see. Yeah. Lakshmi, can you see the screen? Yes, ma'am. Great. Okay. So now we are at the level basic, and moving on to that, I am going to cover these topics in the level 2. We are going to understand these topics so that by the end you will get enrolled into the next level. You will have a very good understanding of this subject. So in the first session, we are going to talk about the drawing tools, drawing materials, and I'm going to give you some drawing tips as well so that it will be helpful for you throughout this entire fashion illustration. That will be the lifetime tips for you. In today's session, we are also going to talk about the role of a fashion illustrator in fashion industry. After that, we are going to do the second session would be about gaining the basic knowledge about illustration. मतलब ये डिजाइनिंग क्या होता है, फैशन डिजाइनिंग एंड फैशन इलस्ट्रेशन, हाउ इज इट रिलेटेड टू ईच अदर, what is the color theory, what is the terminology means what are the words used in the fashion illustration subject. जैसे रेंडरिंग हुआ, बहुत सारे वर्ड्स है, सिलुएट्स हुए, बहुत सारे वर्ड्स है फैशन डिजाइनिंग रिलेटेड, बट वी विल बी कवरिंग ओनली बेसिक वर्ड्स व्हिच आर रिलेटेड टू द fashion illustration. We'll be also learning pencil arts. In the pencil art, there are a lot of concepts like it's called value, wherein it involves shading, how to do shading, scribbling, stippling, hatching, cross hatching effects. This is very interesting subject. This will help you to make the object look in a 3D form. I hope you understand the meaning of 3D form. एक जिंदापन हम जिसको लाते हैं, it is called 3D form. Are you all with me? Are you all Yes, with dear. me? I am. Great. Yes, yes, we are here. Yeah. So in third session, we are going to understand the anatomy and poses. Anatomy means how is the woman or man figure has been divided, the proportion of the body. This is very important subject to understand. Once you understand the proportion of the body, we are going to start with making straight front view and the back view. Front view and the back view of the woman, and then we'll be heading to this technicals, which is 9.5 head, mechanical and fleshing crookie, 10 and 10.5 head, and 12 and 12.5 head crookie. I'll be explaining you why in today's session only. I'll be explaining you which one we use the most in the industry. This is just the overview. In eighth session, we'll be talking about men's template, how to make front and back. Ninth session would be about kids, which is going to be 5 head, mechanical and fleshing crookie. We also be learning drawing body features, like basic features. What is the difference between men's and female face? What is the difference between their eyes, nose, lips, even the feet, hairstyle, even the legs? How do we differentiate while drawing for the female and the male? We will also be learning the extra poses, which will be taught on the stick figures with their front views, 3/4 view, and the side view for women. And the last session will be for the men's. So, this overall session will give you an idea about the basic. What is the basic illustration is like? It will make you feel confident. It will build up your foundation, and it will prepare you for the next intermediate level. Okay, so I am just heading for the next one. Okay, so now we are going to understand the objectives. Objective means what are you going to learn? So this session is entirely designed, this level is entirely designed to you to introduce basics of fashion drawing and techniques, drawings of human figure, male, female, kids in various proportion, and how to draw front, 3/4 and the side poses. Now, let's head on to our main topics, that is the introduction. So, being into the illustration subject, you need to first understand what is illustration. Then we will be talking about drawing tools and materials and drawing tips. So, I need this session to be very interactive. So, Seema ji, I'm going to start with you.
I want you to tell me, according to you, what is illustration? Hello? Uh, Yeah. yeah, Vrishali. Yeah, tell me. According to me, illustration is designing garments Hmm. according to the fashion, which is the present fashion. Designing the garments according to the fashion. Okay, fine. This is And your definition, right? yes, So you are learning illustration because you got some designs on your mind and you want to translate yes, them on the paper. yes. Correct. Right. Lakshmi, Ma'am, what is your idea? What is the according to you, what is the meaning of illustration? illustration means whatever ideas you have, they. No, I can't explain. Darling, see, now you're into the fashion, right? The Yes, yes, ma'am. Yes, ma'am. very first thumb rule is Yes, that ma'am. no matter whatever Yes, ma'am. ideas you have in your mind, the very basic rule is you need to be able to express it, you need to be able to say it. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So now Yes, the ma'am. illustration, the subject illustration would provide you the platform to express it on Ma'am. paper, Yes, ma'am. right? It will give you the privilege to Yes, draw ma'am. it on the paper. Whatever exact things on your mind are, that you can put it on the paper. And this Yes, subject yes, has ma'am. been so advanced that you can actually create the texture as per your requirement. For example, if there is a Yes, denim ma'am. look, you can create the denim look. If there is a velvet look, you can create a velvet satin. Whatever look you want, whatever prints you want, you can create Yes, with ma'am. the help of this subject called illustration. But Yes, ma'am. Yes, Lakshmi, ma'am. in your case, I would also like to say you that alongside with the putting it on the Yes, ma'am. paper, you will also be able, you should also be able to speak it. You need to communicate. You need to communicate your Yes, ma'am. ideas. Yes, ma'am. So what I want is that Yes, ma'am. Actually, what's the matter is I feel fear to talk in front of all. exactly, That's the exactly. main problem for me. So this fear is common, Lakshmi. You don't have to worry. Yeah, ma'am. Yes, ma'am. I am your Yes, teacher. ma'am. I can be your friend also. You can talk to me because I have seen this problem in India with many people. It's not only you. I had Yes, ma'am. students Yes, ma'am. who were very discomfort. They had lack of confidence. They were not able to convey Yes, what they ma'am. wanted to say. But by the end of the batch, they could speak it. So you need Ma'am, to, one more thing, ma'am. yeah. Actually, my father is a big politician in Andhra Pradesh. He is MLA from past 15 years. And Wow. I give a lot of speeches in my own language, but I can't give speeches in English properly. I have a fear, ma'am. Okay. I don't know is if any mistakes are there, people are thinking are bad like that. There are a lot of thinkings are there in my mind. That's the No, main Lakshmi, issue. I'll tell you what. Your basic problem is not a fear. Is not a fear about the talking Ma'am. content. Your basic problem is the language. Yes, yes, ma'am. Only problem is the Yes, ma'am. language. Yes, ma'am. Obviously. So, in order to be Yes, ma'am. Yes, excellent in ma'am. the language, I won't say concentrate on English. No, I will not say that. Yeah, ma'am. Ma'am. Yeah. I will tell you Ah, ma'am. to Ah, ma'am. revise your vocabulary for illustration subject. Whatever words we use in the Okay. illustration, like fabric, Okay. textures, rendering, Yes, ma'am. vintage, all Yes, these ma'am. fashion related, couture, these words if you understand, Yes, you ma'am. will be very good in the subject. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so basically the fashion illustration is a communication of fashion. It speaks, as I said, it speaks. Your Yes, ma'am. drawing speaks. You don't have to put extra efforts. Once you are thorough, you have a good practice, you know how to put it on the paper in a right way. This is what it is. It's going to speak itself. And the fact is, fashion illustration is existing from more than 500 years. It's quite surprising, but when the clothing started, when the revolution started, when the clothing started, that time onwards fashion illustration started. But it wasn't on the paper. It could be a wood crafting or some any kind of crafting, or that sort of, not on the paper. But this is very old, but because with the era it is developed now. Also, fashion illustration has always been a need to translate ideas into garments.
since the time luxury clothing and fashion came into existence. This means that, for example, you see this red carpet collection. The celebrity wears beautiful garments, actor, actress, they wear beautiful garments. Not only that, if you go to the tailor and you explain them that you want this style and that style, so you always prefer to put it on the paper and then tell him that okay, I want this, भैया मुझे ऐसा बना के दो और यही स्टाइल मुझे चाहिए. This is what is the role of fashion illustration. It shows the presence of the fabric texture through art and gives out a visual luxury. मतलब आप जो भी कुछ पेपर पे डालते हो उसको देख के ही सामने वाले को समझ में आता है कि this is what I want, this is what my idea is. Basically whatever your ideas and concepts are, you put it all together through fashion illustration. Now you need to understand there are two types of illustration. There are two modes to do the fashion illustration. So Seema ji, आपको ये बात पता है कि we can do the illustration on paper or at the same time we can do it on digital? आपको ये बात पता है? जैसे इसको क्या बोलते हैं? Yeah, I know that. Yes, I know that. Sorry? Do it on the computer. What you call it? ये नहीं पता कि ये नहीं पता है कि उसे क्या बोलते हैं, बट डिजिटल भी होता है, ये पता है. Okay. So I'll tell you what. Couple of years back, it was just a fashion illustration was limited to papers only. Paper pe we use lot of mediums, like we have this is called Staedtlers. We got this watercolors. So ये सारे medium use करके we create the effects and we make sure that whatever drawing we have is something what we actually want. But now in this era, the technology has developed so much that there is something called Fashion CAD. Fashion CAD has got 3 different softwares, which is called Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, and also Corel Draw. With the help of any of these 3, not exactly any of these 3, Adobe Photoshop and Adobe Illustrator plays different role. But yeah, all total what you can do is you can create garments, designs on computer. So here on left side, you see that is done on the paper. This is what you're going to learn in this entire class, basic and intermediate level, how to do it on the paper. But yeah, if you go for the CAD, this is going to be the effect. This is done on the CAD, which is actually similar to the paper, but this is more polished, more refined. आप देख सकते हो इसका clarity, इसका जो the finishing है, it is up to the mark, very much like a standard. So this is what the difference is. It is done on the paper sheet or digitally. Lakshmi, have you learned Fashion CAD? No, ma'am. Today only they start, ma'am. Acha, no Fashion CAD? No, yes, ma'am. Today only they start CAD classes. Today, where you started CAD? Hello. JD Institute, ma'am. Okay, you started I'm with CAD. Okay, good. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Introduction class is going on. Okay, good. Yeah. Seema ji, you had some question? Yeah, actually, this thing can only be done in computer, or we can do this in our mobiles also. No. This is only available on the computer. Basically, you have to download these, like the way you download apps. So these are like paid versions, but you get those crack versions also. So आपके घर में कोई होगा जिनको crack version download करने आते हैं, तो you can download the crack version. And ma'am, can you please tell me what the apps are required for CAD, ma'am? What we need to see, initially, old time people used to do the designing on Corel Draw. But I'll tell you frankly, nowadays everybody use Illustrator. So basically, Illustrator and Photoshop goes together. Illustrator will help you to create this drawing you see here on the screen. This drawing will be made with the help of Adobe Illustrator. And for Photoshop, it will give it extra effects. Like you want to darken it, you want to lighten it, you want to add some nice backdrop, nice background as per your theme. That will be the role of Adobe Photoshop.
So they do First preference for Adobe Illustrator, right? yeah, Adobe Illustrator. They go hand in hand. Adobe Illustrator, Okay. there is a pen tool, like the way you do it using your hand and the pen and the pencil. In Adobe Illustrator, there's a pen tool and you can go on. So again, that's a vast Okay. subject, but just for the basic idea, you should know that it can be done on the Fashion CAD, Adobe Photoshop, Illustrator, and CorelDRAW. Okay, I'm moving to the next slide. Ma'am, actually, in my classes, they explain only what's the croquis, why we draw cloths on that, how we draw croquis. Just they explain simply one day like that only. Yeah, That's why I that is joined in our course. maybe that is a difference from institute to institute. Because we Yes, prefer ma'am. to go more into Obviously. detail. We just don't want to Yes, talk, ma'am. like give some like basic knowledge. This is basic but detailed basic knowledge what I'm trying to convey you. um, But this course gives a lot of knowledge to me, right? No, a lot of experience to yeah, in. this will make sure that your foundation is perfect. Okay, Yes, ma'am. Yes, ma'am. If so any mistakes are there in my language, please forgive me. sure, no problem. Okay. No problem. So I'm going to move on to Thank the you. next slide, which is going to explain you role of a illustration in fashion designing. अब तक आपने जाना what is fashion illustration, why we do it, but what is the role of fashion illustration in fashion designing? So fashion illustration helps a designer, means a fashion designer, to put down visual ideas and concepts in the form of a design. It is mainly used by the fashion designers to brainstorm their ideas on paper or digitally. It means now you're into the fashion industry. So being a designer, you always make collection. No matter in future if you want to launch your brand or you work for any company, you are there to make a collection. So आप collection ऐसे ही नहीं बनाते. You have to do some research, fashion focused, market में क्या चल रहा है, क्या fashion में है. You start working on it in advance. For example, जैसे there is called spring summer. Fashion में spring summer होता है, एक season होता है, and there is a season called fall winter. So if there is a spring summer season, spring summer में I can't use wool fabric, and fall winter may I can't use net fabric, it will be wrong. So you need to plan the fabric, you need to plan the theme, you need to plan the entire your collection as per the theme. And after you plan your collection, there is something called brainstorming the ideas. Brainstorming matlab, if I take the inspiration, suppose I have a theme, I take a theme from a nature is my theme, and I travel a lot. Suppose I am in somewhere in a beautiful place like Kashmir and I love those flowers, that is my theme. So I will start brainstorming that how will I put my ideas into the paper, how will I take the inspiration, I like the color combination, so how will I put it, but I know this is spring summer so I can't use this fabric, but yes, I can use this fabric, I can use silk, I can use chiffon. So these soft and light weighted fabrics are good for summer. So that is how I will start generating ideas and I'll start putting it on the paper. So in order to put it on the paper, you need to know how to do the illustration, how to convert it into that particular fabric. Like you can see the drawings here, center drawing. If you see, if I see that the jacket, what she is wearing, I can easily say that this is like a satin finish or maybe a silk finish, and then she has got a embroidery. So this is visually very clear that this is something looking like a party wear. She's going for the party. This is like a tomboyish. So there are visual effects which actually communicates with you. And this is what we are going to learn, how to actually do it in a visual form in total details, right? So in order to be a fashion illustrator in the fashion designing, you need to understand all aspects of fashion designing. Once you understand the aspects as in fashion designing, how to make the collection, right from concept forming a theme, to the collection making, to its creation, in between there comes the illustration. Without illustration we cannot do anything. हम लोग आइडियाज कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन we'll have to put it on the paper, right? So that is what the role of illustration is.
So basically, this is an art to provide a viewer with an insight to make them extremely aware of what is in fashion trend. जो fashion trend में है, for example, polka dots were in very much fashion last year. Everywhere I could see polka dots. So whoever draw as a fashion illustrator, they had polka dots drawn on their paper on this illustration. So that is what illustration does. It shows you, it tells you the fashion trend. It is also the presentation of the fabric texture through the art and gives you a visual glamour. Visually, if you see some glamorous sketch, you feel that yes, this is you can figure it out. This is for red carpet, or this is for office wear, or this is for casual. Fashion illustrator focused our attention by their colorful and stylic development. So this is again very important. Fashion illustrator focused our attention by the colorful and stylic development. What does it mean? Let me tell you very clear. Now you are into the fashion illustration. I don't want you to be a regular fashion illustrator. No. Being the illustrator, you have to develop your own style. इसका मतलब क्या होता है? Developing your own style means what? You see lot of illustrations online. You go Pinterest, you go Google, lot of illustration आपको दिखेंगे, right? But हर एक designer के illustration के styles अलग है. Some people do it to the basic level, some people do it to the little extra, and some people do it very extravagant, जो कुछ समझ में नहीं आता but दिखने में बहुत beautiful दिखता है. So everybody has their own style. आप जैसे when I do the illustration, मैं पूरे face के features नहीं बनाती हूँ. I only draw these eyebrows and I draw the lips for the face, and that's it. That is what my stylized version is. तो आपको आपका stylized version find out करना है. Whenever अभी आप ये जिस process में हो, when you will start designing, writing with the paper, you will automatically develop your own style. So from day one, you have to understand that you have to develop your own style. ये मन में कहीं तो रख दो, मुझे मेरा खुद का style develop करना है, नहीं मुझे किसी का copy करना है. Copy करना is okay, but exactly copy paste मत करो. You have to come up with your own style that will make you different from everyone. Secondly, it is the platform for all designers. That's what we are here, ma'am. Sorry? We don't want to copy anyone. Yeah. Actually, we don't want to copy anyone. Lovely. That's the spirit. That's why. See, copying is also a skill. Copying is also skill. I will tell you that. It is in the same lecture. I will tell you how to copy. Right? So basically, fashion illustration. But our own style is different, right? Yes. Our own. And I'm sure, Lakshmi, you will definitely have one of the unique style, because I can see you're very creative. Thank you, ma'am. Thank you. No problem. So basically, it is a platform for all designer to translate ideas from clothing to the garments. Clothing मतलब कपड़े से हम उसे garment में बना देते हैं. This is the platform for that. Now, very important things. There are 3 types of illustration sketches. जो हम sketches बनाते हैं उसके 3 types होते हैं. अभी तक आपने जो देखे वो एकदम beautiful, like nicely it was dressed on the illustration form on the model. But remember, there is something called quick fashion sketch. ये quick fashion sketch आपको कब काम में आता है? आपको as a illustrator हमेशा आपके पास एक sketch book रखना है. This is a good idea to keep a book with you, small book. There can be 2 books. One can be kept at home and one can be pocket friendly book. Wherever you go, you see something, you observe the details, you put it down on the paper. So this is a quick fashion sketch. You don't have to really think like 100 times how you can draw the croquis and then how you can dress it up. No, this is just a basic idea of designs. For example, here you can see various details. The designer has found out some nice details and they have jotted down. And in their free time, they will sit down and they will take the inspiration from these ideas and they will form their own collection. They'll form their own ideas. So the first one is quick fashion sketch. The second one is rendered fashion sketches.
nicely rendered, as in using the various color mediums, various techniques, how to create the texture, shape and everything. That is how we make this rendered fashion sketches. And the last one is CAD. This is called fashion flat CAD, flat sketches. This is used in the fashion industry, especially for the production of the garment. When we have to produce the garment in bulk, जब हमें बहुत सारी क्वांटिटी में गारमेंट्स बनाने होते हैं, हम मास्टर जी को कंपनी के लिए, जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स है, ज़ारा हो गया, बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स है, दे डोंट डू illustration on the paper, they do it on the computer. This is done using CAD. ये कंप्यूटर पे किया जाता है. ये हम हाथ से भी बना सकते हैं, बट कंप्यूटर गिव्स वेरी गुड फिनिशिंग. दिस गिव्स यू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. इसको बोलते हैं फ्लैट फैशन स्केच. फ्लैट, it's like the garment is placed. जैसे कोई सपोज ये कपड़ा है, I have placed this on the table. कपड़े को मैंने टेबल पे रखा है, वो फ्लैट हो गया, और उसको कैसे दिखेगा टेबल पे रखने के बाद, दिस इज व्हाट इट इज. इसके लिए दैट इज व्हाट दिस इज कॉल्ड एज फ्लैट फैशन स्केच. Lakshmi, are you clear on this? Because if in future, if you're working in the export, but in the meantime, you have any questions so far what we learned? Okay, I don't have any questions, ma'am. Actually, you explained in good way. Okay, great. I don't have any doubts at all. Okay, good. So we'll just wait for, I'm just going to call Seema ji to ask her to join fast. Okay, okay. Okay, ma'am. Oh yeah, she's here. Okay, she's just joining in. Hello. Hey, great. Hello. Welcome back. हाँ. चलो, Yes. सीमा जी, आपको कोई क्वेश्चन है? You have any questions so far? Yes, I have, Vishali. Please tell me. What is Stedler's? STEAD? Oh, yes. We are going to cover that now. We will be covering that now. So I'm directly sharing my screen, and we'll just head on to the next topic. Okay. One more doubt, Vishali. Yeah. Tell me. Detailing is drawing, right? Detailing means, suppose you draw something. Suppose you draw. Okay, you see the screen. You see the screen here, and you see the flat sketch. Okay, on this screen, if you could see, there are these small stitch lines. The small stitch lines. There are these buttons. There are these loops. There are this zip lock here. The stitch line is here. So these small things are called as detailing. When you design something, more and more you add details to the garment, it starts speaking. वो हमसे बात करने लग जाता है. जितना आप उसमें डिटेल डालोगे ना, उतना वो अच्छे से हमसे कम्युनिकेट करता है. सो वी डोंट हैव टू एक्सप्लेन कि हमें ये चाहिए. इट विल स्पीक इटसेल्फ. वो खुद ही बात करेगा कि मैं ऐसा हूँ दिखने में. दिस इज व्हाट मी लाइक द गारमेंट. So किसी भी चीज में, this is again a tip that whatever you do as a illustrator, make sure that it has got nice details on it. आप डिटेल में काम करने की कोशिश करो. कोई भी illustration आप करते हो ना, जितना आप जी जान से उसे करोगे ना, उतना वो जिंदा होगा. You getting it? Oh, yeah. One more, Vishali. Illustration, according to this definition, communication of passion, right? Yeah. So, communication with whom? Like, why that word is used here? It's communication with the person who is actually you are targeting to. Suppose I do the illustration. My illustration is coming. If suppose you come to me as a customer and I want to design a dress for you, okay? And I make a sketch on paper. So if I make some paper sketch and I will show you, okay, ma'am, this is your sketch. For example, it will speak to you. You don't have to ask me कि ये कौन सा कपड़ा है, इधर क्या डाला है, इधर क्या डाला है. No, everything is on the design. That is called communication. ये खुद ही बात कर रहा है design.
It is like that. Okay. Clear? Yes, clear. Let's And last one. Yeah. Brainstorm means generating and putting it on paper, right? नहीं. Brainstorming इसको, this is a word usually बहुत सारे designers use करते हैं. It is called a brainstorming process. Storm मतलब क्या? तूफान. Storm का मतलब है तूफान. ब्रेन में तूफान आना चाहिए. अगर आपने कुछ 10 चीजें देखी है, that is your idea. 10 चीजें आपने देखी है, वो आपकी आइडिया है. उस आइडिया का दिमाग में ऐसा तूफान घूमना चाहिए कि आपको उसमें से कुछ अच्छा सूझे. ओके. इसको बोलते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोसेस. हम जितना अपने आइडियाज के साथ खेलेंगे, उतना एक पॉइंट आएगा कि हमें लगेगा यस, ये मुझे चाहिए था. Okay. So that is all about brainstorming process. Ma'am, do you explain about this brainstorming too? Actually, these people explain about brainstorming. Actually, I don't get that point what they are saying. What? I didn't get you, Seema. Sorry, Lakshmi, I didn't get Actually, brainstorming classes are already done for me, ma'am, but I don't get what they are explaining in the class. That matter is very small, but they explain in a long process, long way. But I need a shortcut way. Yeah, so this is what the short is like. Brainstorming means whatever ideas you have, you play with it. It's like a storm. You should get a storm. Matlab, tufan. You understand Hindi? Yes, Lakshmi, you understand Hindi? Yes, ma'am. Yes, ma'am, I understand. Actually, my husband is a Marwadi person. That's why I know Hindi too. Okay. Nice. So let's move on to the next slide. Okay, ma'am. Okay. Now, अभी आपने एक सवाल पूछा सीमा जी कि ये आपका सवाल क्या था, डिटेलिंग क्या होता है, करेक्ट? Now, yes. You see this slide, it is fashion illustration ideas. तो इसमें क्या है? ये स्प्रिंग समर कलेक्शन है और ये है फॉल विंटर कलेक्शन. स्प्रिंग समर कलेक्शन जैसे डिजाइनर मैंने कहा 2 स्टेज में काम करते हैं. एक तो स्प्रिंग के लिए करते हैं, स्प्रिंग समर, और एक फॉल विंटर के लिए. सो अगर आप ये स्केच देखो, सो both of you, can you tell me इसमें आपको क्या नजर आ रहा है? What is the highlighting point? इसमें आपको क्या लगता है जो सबसे, मतलब आपको क्या लग रहा है ये कौन से कपड़े में बना है? Just describe this. Just describe this. One is netted one and another one is hold on. We'll take one by one. सीमा जी, इसको आप describe कीजिए. आपके हिसाब से आपको क्या दिख रहा है इसमें? Yes, it's a netted garment. The upper part is net one. And the inner fabric is, I think it's cotton. Okay, right. और आपको इसमें क्या डिटेलिंग दिख रही है? आपने डिटेलिंग की बात की. हाँ. Yes, floral fabric है. And strap, sleeveless. It's a sleeveless fabric. Yeah. आपको और क्या डिटेलिंग दिख रही है? आप जिस डिटेलिंग की बात कर रहे थे ना, वो इसमें है. बताइए मुझे, आपको क्या क्या डिटेलिंग दिख रही है? The frills, I mean the floral lace yes. Below the gown. Perfect. Yeah. और क्या? And it's a pleated gown, right? And the inner, this thing, what do you say? Inner cloths are attached with each other with a strap. Okay. This is your observation. Okay, fine. Yeah. Fine. Now, Lakshmi, what, you tell me, what do you observe in this? First one, ma'am. The details. We are talking about the details. Tell me what you see in this. Okay. Netted one and floral lace. Yeah. And one basket is there in her hand. Only about clothes, right? No, anything. Detail can be anything. Okay. And inner wear is different and the top is different, and she wear a band on her neck, on her head. Right, correct. Okay. And she wear a floral sandals related to her frock. Perfect. So basically, moral of the story is, I don't have to explain this to you because this illustration has already spoken to you.
कि मैं क्या Yes, हूँ, yes, ma'am. मेरे पास क्या क्या Yes, है, ma'am. what all details I have. It has already spoken. So this is called Yes, yes, ma'am. communication, illustration, communication, details and Yeah, communication. yeah. अभी आप इसमें एक बात ध्यान रखो, आप जब भी इलस्ट्रेशन बनाते हो, जैसे हम फॉर एग्जांपल हमने केक बनाया, और केक के ऊपर वी पुट अ चेरी डेकोरेशन के लिए, इट लुक्स ब्यूटीफुल, इट लुक्स कंप्लीट. Yes, yes. So Yeah, this yeah. is what same thing happens for illustration. Whenever this illustration was made, only first the croquis was made. This is called croquis. The lady standing is called croquis. फिर उसके ऊपर designer had this visual idea. They made a ड्रेस को उन्होंने ट्रांसपेरेंट बनाया यूजिंग दिस डिफरेंट मटेरियल्स, डिफरेंट रेंडरिंग टेक्निक्स. जैसे ट्रांसपेरेंट इफेक्ट कैसे क्रिएट किया जाता है वो भी हम सीखेंगे अगले सेशंस में, नेक्स्ट लेवल्स पे. एंड हाउ दे हैव क्रिएटेड नाइसली डिटेल्ड फैशन, दिस फ्लोरल प्रिंट. The best part of this collection is this detail. The lace has been placed so nicely. It is called detail work. इसको करने के लिए डिजाइनर को टाइम लगा होगा, but after finishing this, it's looking so beautiful. This small lace has added the beauty to the entire dress. At the same time, very much you have to remember that accessories. Lakshmi was out. Okay, hold on. Lakshmi just went out of the. Okay. Yeah. Let her join. Yeah. Till Lakshmi? that, Network issues, ma'am. Sorry. It's okay. Well, okay. I will just quickly repeat for you that this illustration you see, this was Yes, basically ma'am. the basic croquis. On that, Yes, designer ma'am. has added dress. Not only the dress, it has got a nice lace also here, and Yes, ma'am. it is been drawn in the medium of, it's a watercolor, and they have created a nice transparent net effect. So this is what is called rendering fabric. So because of Yes. rendering, they have got this this net effect. And the main part of illustration, any illustration you take, is the accessories. What is the meaning of accessories? Your hairband, your extra bag, handbag, or this bucket, kind of this bag, this footwear. This small details makes the design stand out. Even though even for this sketch you see the here fashion fall winter collection. So definitely in winter you wear jackets, you wear wool jackets. So in this they have made a basic illustration with nice belt. Even though you see this belt, it has got beautiful detailing. So my main thing to all the designers, to all the illustration, I would love to say, work on the details. अगर आपको 3D इलस्ट्रेशन पाना है, 3D इलस्ट्रेशन मतलब एक जिंदापन इलस्ट्रेशन में लाना है, तो आपको डिटेल पे काम करना बहुत जरूरी है. यहाँ पे यू सी दिस ब्लैक एंड व्हाइट स्केच, यू सी द शैडो इफेक्ट्स हियर, यू कैन सी दिस शैडो. दिस इज कॉल्ड pencil shading. There are techniques of pencil shadings that we will be learning in the next session. जो अपना परसों का सेशन है, I'll be taking you through that, how to create this shadows, how to create this effects. So this is all making, आपको लग रहा है ना कि ये जैसे कि उसने एक्चुअल में डाला है ये, बिकॉज ऑफ दिस शेडोज, दिस डिटेलिंग्स. तो ये हमें मेक श्योर करना है कि हम वो जिंदापन, किसी भी आप कोई भी ड्राइंग बनाओ, यू नीड टू मेक श्योर कि ये मुझे जिंदा लगना चाहिए. दिस शुड लुक लाइक अ 3D. गेट इट? यहाँ पे भी उनको ड्रेस चढ़ाने के बाद भी, ये कंप्यूटर पे बनाया गया है, कंप्यूटर पे टेक्सचराइज किया है, बट इट इज लुकिंग एज इफ शी इज एक्चुअली देयर, द लेडी इज एक्चुअली स्टैंडिंग देयर. तो ये एफर्ट्स लेने होते हैं हमें अपने तरफ से काफी प्रयास करना पड़ता है, सो दैट वी कैन गेट दिस इफेक्ट. सो अभी से ध्यान में रखो, आपको बस इलस्ट्रेशन बनाने के लिए नहीं बनाना है, आपको उसमें एफर्ट्स डालने, उसमें डिटेलिंग डालने, तब जाके आप अच्छे इलस्ट्रेटर बनोगे. गेट इट? नाउ one more important thing I would like to tell you. From today onwards, Yes. you have to start thinking creatively. हमें ऑर्डिनरी नहीं सोचना है. हमें अगर कुछ अच्छा करना है, किसी को अच्छा करके दिखाना है, वी हैव टू थिंक क्रिएटिवली. किसी भी चीज को देखने का आपका जो नजरिया है, वट एवर एंगल यू लुक एट द थिंग्स इन, मेक इट इन अ क्रिएटिव वे.
यू सी समथिंग, एनीथिंग यू सी, थिंक इन अ क्रिएटिव पर्सपेक्टिव, उसके क्रिएटिव एंगल के बारे में सोचना स्टार्ट करो. दिस इज द फर्स्ट स्टेप फॉर एनी डिजाइनर. ये कोई बताता नहीं है, आपको अभी से अपने दिमाग को ऐसा ट्रेन करना है दैट यू आर क्रिएटिव. दैट्स इट. बीइंग क्रिएटिव, डिटेल ओरिएंटेड, हमने डिटेल्स की एक बात की. फिर दूसरी बात, हमें इनोवेटिव बनना है. इनोवेटिव मतलब क्या? कुछ नयापन लाने की कोशिश करो. हर एक चीज आप जो बनाते हो उसमें कुछ नयापन लाओ. रेगुलर आप साड़ी के डिजाइन देखते हो, ब्लाउज के डिजाइन देखते हो, नहीं चाहिए. फॉरगेट ऑल दैट, वो नहीं चाहिए. हमें कुछ नया सोचना है. वो एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में नहीं आएगा, ये प्रैक्टिस से आएगा. एक दिन ऐसा आएगा कि आप किसी चीज को देख के, अगर लोग बोल रहे हैं ये ए है, आप बोलोगे ये जेड है, मैं इसको जेड में कन्वर्ट करूंगी. वो एक प्रैक्टिस से आपके ब्रेन को इतना ट्रेन होगा, अपने आप को वो आपको करना है. हर चीज को लेके कुछ नया सोचो. सो दिस इज हाउ यू विल गेट नाइस इलस्ट्रेशन. ये अपना फाउंडेशन है. अगर आप इसी सोच को लेके आगे चलोगे तब जाके आप अच्छे इलस्ट्रेशन बनाओगे. नहीं तो आप वो जो ऑर्डिनरी इलस्ट्रेशन दिखते हैं ना, वही बनाओगे. हमें वो नहीं चाहिए. हमें चाहिए आपसे कुछ एक्स्ट्रा, कुछ अच्छा आए, एक डिजाइनर की तरह कुछ बाहर आए आपसे. और आई एम टेलिंग यू, ये हिडन टैलेंट बहुत लोगों में होता है. बहुत लोगों में हिडन टैलेंट होता है, छुपा हुआ होता है, लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि उनके पास ये टैलेंट है. लेकिन जब दिमाग के ऊपर प्रेशर दिया जाता है ना, तब वो पेपर पे आता है, तब लगता है ओ माय गॉड, आई डिड दिस, ऐसे लगता है. सो या, गुड लक विद दैट. नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम सीखेंगे हमें क्या क्या ड्राइंग मटेरियल चाहिए. जिसमें सीमा जी, आपको जो तीसरा सवाल था, स्टेडलर्स क्या होता है, वो सब हम इसमें सीखेंगे. सो Okay. so this is called drawing tools. What's the meaning of drawing tools? ड्राइंग के लिए जो जो चीजें चाहिए, वो इक्विपमेंट्स जिसे बोलते हैं, इसको हम ड्राइंग सप्लाईज भी बोलते हैं. क्या क्या हमें सप्लाई चाहिए, इसे हम वो भी बोलते हैं. सो हमें क्या चाहिए? द मेन थिंग इज फैशन sketchbook. As I said, sketchbook, you can see the picture here. It is a sketchbook. Basically this is a book wherein you write down all your ideas. जो आपके जितने सारे ideas है, आप इसमें डालते हो. Can you all see this closely, that here it is like a shiny material, some like disco type of material is here, embroidered material. And the designer has made this sketch wherein her idea is to put this, can you see this small designing elements? Yes. She has put this all over here. So this is a sketchbook. This is an idea generation book. This is a sequence Visual fabric. diary, right, ma'am? Sorry? Visual diary, right? Visual diary. Perfect. That's the perfect word. This is the sequence fabric, and the designer has created the sequence blouse and the jacket. So this was her inspiration. This is an inspiration. This is a visual diary. I like this fabric. I stick it here and I make this design. So this book you have to carry all the time. Again, I said that this can be in pocket friendly size also, or this can be a bigger size also, however is comfortable for you. Then we have various types of drawing papers. I'll be talking about that in details in next slide. Then we have this drawing pencils. What I had asked you to get was this Faber-Castell 6 drawing pencils. In this, there are total 6 pencils starting from, well, they have, okay, I got the packet here. They got 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 8B. Have you got this packet for you? Yeah, I have it. आपके पास कौन से साइज लिखे हैं पैकेट पे? This thing, same Rishali. 2B से 8B तक है. अच्छा, okay, because I think they are not putting HB now. Okay, so basically just to understand now, whenever we will start with the drawing, you will be using 2B because इसमें HB और B नहीं है. So drawing के लिए we use HB, B, 2B. एंड फॉर शेडिंग, हाईलाइट, शेडिंग का मतलब अभी हमने जो सीखा, एक ड्राइंग को एक जिंदापन लाना है, शेडिंग करना है, उसके लिए वील बी यूजिंग 4B, 6B, 8B. जितना नंबर आगे आगे चला जाता है उतना उतना उसका डार्कनेस बढ़ जाता है. ये आपको पता होगा, जितना ज्यादा नंबर होगा इट गेट्स मोर डार्कर. Yes. Then we also have charcoal pencils. Okay. Ma'am, actually we don't have charcoal pencils, ma'am.
You don't know, right? I'll show you 1 second. No, I don't have. I don't You order don't have. those. Okay. You will be needed anyways for the next intermediate level, not this level. So charcoal Okay. pencils are basically they come in three different types. One is soft, neutral, and hard. Okay. And as like you can see from soft to hard, their intensity जो बोलते हैं ना, darkness goes very high, and this charcoal pencils are used for portrait making. जो portrait बनाते हैं face वगैरह, उसके लिए use किए जाते हैं by artist. But we also make the illustration using charcoal pencils. जो हमारे टॉपिक में कवर है इंटरमीडिएट लेवल पे, we'll be doing that also. Then there are sharpeners and erasers. आजकल मार्केट में डस्ट नो डस्ट मतलब डस्ट फ्री erasers are also available in market. Then we have this regular gel pen, black ball point pen, gel pen you can call it. And you also get the pens for the artist. जो artist के पेन होते हैं ना, वो 0.05 mm से स्टार्ट होते हैं और उनका ज़्यादा से ज़्यादा थिकनेस होता है 0.8 mm, बड़े थिकनेस के मिलते हैं. These pens are very useful. So इसमें से कोई जरूरत नहीं कि आपको 0.5 ही चाहिए, 0.8, as per your comfort. As I said that you have to develop your own style. Whenever you make any sketch, आप उसको outline करते हो. Outlining is very important, and that outlining is done with this. ये जो outline होते हैं वो आपके sketch को stand out करती है. It makes it stand out. You see here, it has been nicely outlined. This has been outlined by this gel pen, black gel pen. ये दिख रहा है आपको, ये जैकेट और शॉर्ट्स एंड उसके लेग्स को आउटलाइन किया है. Whenever we'll make Yes. any design, any sketch, हम उसे outline करेंगे so that it stands out. आपको ये Yeah. clear है, right? Outlining is very Yes. important. Moving on to next, हमें और भी कुछ अलग टाइप्स के मार्कर पेन्स मिलते हैं. मार्कर पेन्स means for example, this is one of the marker pen. It has got a thick tip. इसकी टिप काफी थिक है. So it has got a different shape. तो ये टिप के भी अलग अलग शेप्स होते हैं. Because marker pens again play very important role while illustration. और ये भी आप पे डिपेंड होता है कि आपको आपका क्या स्टाइल चाहिए. आपको हर एक चीज में मार्कर पेन का आउटलाइन देना है या यू वांट टू यूज जस्ट द फाइन और थिक लाइन. दैट इज योर स्टाइल कंप्लीटली. I can only guide you, but you have to decide कि मुझे कैसा चाहिए. Get it? Ma'am, do you explain about watercolor, how to use watercolors and markers, how to shade? That is where we will actually get onto the session कि हमें ड्रेस पे अभी watercolor use करना है. That time I'll show you in practically how to do it. Now this is just to understand कि हमें illustration के लिए क्या क्या drawing tools की जरूरत है. This is just a basic understanding of tools. आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, आपको इनके नाम पता होना चाहिए, कौन से साइज में अवेलेबल होते हैं, ये आपको एज अ डिजाइनर इलस्ट्रेटर पता होना जरूरी है. जी. Okay, and then we have scales, we have brushes. I think I have sent you the list that we need some brushes from Faber-Castell, different kinds of brushes. We are going to cover that. No, I think you don't mention. Yeah, Rishali, even I didn't get that list. That is on intermediate level. अच्छा, आप basic level पे enrolled हो. Okay. Yeah, I'll send that. That is fun because in this session, in this level, we are not playing with colors. So that's the reason it's not there. Because I didn't want to confuse you. ये लेके आओ, वो लेके आओ, कोई जरूरत नहीं है. जब जो चीज चाहिए मैं आपको बता दूंगी. So okay, then we have brushes, we have paints. Paints में भी काफी तरीके के paints है market में. Like we have this for example, hold on, there is a tracing paper, colored pencil, water soluble color pencil. First we'll talk about the paints. The paints में you get this wax paints, you have this soft pastels, बहुत सारे types होते हैं. We have this posters, we have this watercolors. Vishali ma'am, can you please show me that soft pastels ones? Sure. What's the best one? Soft pastel. Yes, Cameron. Okay. It create very beautiful effect. Very beautiful Ma'am, matte if finish. any possible, if you don't mind, can you please send me those pictures? Yeah. I'll send you that. Whenever you are free, then only. I'll send you.
Okay. Okay, Then ma'am. we will need tracing paper also. I will tell you the use of tracing paper whenever there is a session. I'll tell you what we are going to do with the tracing paper. And also for drawing tools, we have colored pencils. So now there are two types of color pencils. One is the regular color pencil and one is the water soluble. सीमा जी, आपको पता है ये स्टेडलर्स, इसको बोलते हैं स्टेडलर्स. आप पूछ रहे थे ना स्टेडलर क्या होता है. या ओके, इसको बोलते हैं क्या? I'll tell you The what. company name, right? Or It's the a pencil company names? name. It's a company name and it Yeah. says that it's a watercolor pencil. So now pencil जो होती है ना, हाँ. कलर पेंसिल, उसमें दो टाइप होते हैं. एक रेगुलर पेंसिल होती है और एक वाटर कलर होती है. वाटर कलर मतलब these are actually most of the designers favorite pencils, even mine too. Very, like, not the company I'm talking about, I'm talking about the water soluble pencils. जब भी हम इलस्ट्रेशन करते हैं ना, इससे हम उसको अच्छे से व्हेन वी डू द रेंडरिंग विद दिस पेंसिल्स, पानी में ब्रश डुबा के वेट ब्रश से वी 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 आर गोइंग टू प्ले विद द ब्रश. हम लोग उसके ऊपर ब्रश घुमाते हैं, सो वो पानी के साथ मोल्ड हो जाता है उसमें. यू गेटिंग इट? पानी के साथ अच्छे से मर्ज हो जाता है. Merge. हम लोग उसे बोलते हैं ब्लेंड करना. वी यूज द Okay. लैंग्वेज ब्लेंड. Uh-huh. So we get the watercolor effect. Either you can do it with the watercolors or we can use the Staedtlers to get the watercolor effect along with paint brush. पेंट ब्रश से हम उसे ब्लेंड करते हैं, बहुत ब्यूटीफुल इफेक्ट्स आते हैं. Okay. तो ये इफेक्ट अच्छा देता है. You mean these pencils gives very beautiful okay. effects. Yeah, and you get, this is just 24 colors box. You get it in 48 colors also, 48 shades. Okay. And these are very fast, very quick. इसके लिए ज्यादा पानी नहीं लगता, कुछ नहीं. इससे पूरा कलर करो और फिर से ब्रश से ब्लेंड करो. Just a minute. Pronounce it properly, na, Rishali? What we have to say? Staedtlers. Staedtlers, water pencils, right? Staedtlers water pencils. Ma'am, Rishali ma'am, actually I will give you the photograph. I will send you the photo of all. Would that be okay for you? Yes. Yeah, Lakshmi, what did you say? Actually, I love that Copic markers, ma'am. Those are very expensive. How much they charge for that? Nearby 1 lakh like that. Which one you want? Copic markers. No, you don't need that. No. Copic markers, ma'am. No, you don't need that. These are the Staedtlers. These are good for us. Okay. And they get it. This is for 840 rupees. This pack. But ये बहुत 2-3 किलो आराम से चलेगा. Can I tell you one thing? Yeah. Actually, we have buyers from China. If we use that China word also, people will beat surely. So for you, the good thing is that 265 markers for me, ma'am. Yeah, Lakshmi. Actually, they sent it 265 markers, ma'am. So Lakshmi, what you can do is, if you have something from China, some different thing, you use that for your illustration styles. तो वो आपका एक अलग स्टाइल बन जाएगा. क्योंकि वो that we don't have, ना ही सीमा मैम के पास है. तो आपके पास वो कुछ अलग है ना, तो आप उससे illustration बनाओ, तो आपका एक अलग स्टाइल तैयार हो जाएगा. Nobody can copy. Get it? That is your own identity. Okay. Let's go on next. Yes, ma'am. So yeah, so I'm taking it to the next slide, which is the fashion sketchbook. This is the detail about fashion sketchbook. So basically, it is usually in A3 size book for jotting down your ideas. Jotting down मतलब अपने ideas लिखने के लिए. The fashion sketchbook consists of all the drawings you have made. It is a collection of your ideas, which I think I have already covered, that how you generate your ideas in the fashion book. जरूरी नहीं है उसको एकदम स्टाइलाइज में डालो, कोई जरूरत नहीं है. सिंपल फॉर्म में डाल दो, अच्छे छोटे डिजाइन बना के डाल दो. एंड व्हेनेवर दिस दैट इज गोइंग टू बी योर इनिशियल आइडिया. वो आपकी इनिशियल आइडिया होती है. और जब भी आपको टाइम मिले
तब उसको स्ट्रीमलाइन करो। स्ट्रीमलाइन करना डिजाइन को मतलब उसमें डिटेल्स डालना, उसमें आपको और क्या क्या एडिशनल इनपुट चाहिए। वेन एवर यू आर इन अ गुड मूड, take a tea with you, nicely sit in the balcony, open your sketchbook and start making nicely with the details. That is of the idea of the sketchbook is. ट्रस्ट में बहुत मजा आता है स्केचबुक को लेके जब हम बनाने बैठ जाते हैं ना, क्योंकि इन द मॉर्निंग आई हैड दिस स्टूडेंट, शी सेड मैम मैं जब पेपर लेके बैठती हूँ ड्राइंग करने के लिए मैं पूरी ब्लैंक हो जाती हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। सो वो अवॉइड करने के लिए यू शुड हैव अ स्केचबुक। जब भी आपको मन करे स्केचबुक लेके बैठो, सामने आइडियाज है उसको कन्वर्ट कर दो। गेट इट? Vrishali, do we get this sketchbook in the market? या अब अमेज़न पे है ना, अमेज़न पे है, फ्लिपकार्ट पे है, you get the sketchbooks. Okay. You get it in small size also. Okay. So for this basic level, if we order the book, what exactly should we order? Like For the basic level, you need A3 size paper. I'll show you. This is the size of the paper you need. This is A3 size. So we'll be learning everything on A3. Yeah. You're talking about the sketchbook? Yeah, if we order on Amazon the book, what exactly should we order? Like you should write sketchbook. You should write sketchbook. हाँ. It can be 50 pages, it can be 100 sheets. Depends on what is your budget is like. And there are very too many brands. ऐसा कोई जरूरत नहीं कि इसी ब्रांड का लेना है, कोई जरूरत नहीं है। रिव्यूज देखो, जिसके अच्छे रिव्यूज है पेपर क्वालिटी के, we can go for that. पेपर क्वालिटी के लिए I am going to explain you this now. कौन सी पेपर क्वालिटी होनी चाहिए? Really, ma'am. Actually, I have Bristow company that 160 GSM A3 book I have, ma'am. Spiral bound. No? Is so that enough, 160 ma'am? GSM is a cartridge. It's a quality paper. That is what we use, designers. We use quality paper, TK cartridge sheet. So here it is. Yes, I'm showing you on the screen now. That is what is all about the types of drawing paper. So basically there you get 80 GSM, which is high quality, and then this is suitable for all the drawings, but usually we go for cartridge. Handmade paper is again, it's a rough texture, जैसे उसको texture होता है, वो sketching practice के लिए use होता है, लेकिन it is very expensive, but it gives you good grip on the hand. While doing sketching, it gives you the grip. But I would always suggest go for the cartridge paper, and this cartridge paper is good for light, जैसे हम लोग watercolor sketches बनाते हैं, so when we use the water medium, the fabric shouldn't tear off, it shouldn't get worst. So for doing watercolor sketches, poster color sketches, everything, or for any medium, cartridge paper is the only solution, and it comes in a weight like 100 to 160 GSM. And just now Lakshmi, you said you have 160 GSM, which is the best quality. So ye hamesha actually I have book, spiral bound book, ma'am, that's it. Oh, okay, yeah, spiral bound book. So हाँ सीमा जी, अभी अगर बुक ऑर्डर करने का सोच रहे हो ना, तो आपको क्या करना है, उसके डिस्क्रिप्शन में देखना है कब वो जो क्वालिटी है, व्हाट GSM इट इज, इट शुड बी बिटवीन 100 to 160 GSM. अगर 160 GSM होगा तो बेस्ट है, तो वो आपके लिए अच्छा स्केच है। ओके वृषाली जी, मतलब उस बुक में हम भी ड्राइंग कर सकते हैं क्या वापस? या फिर यस ये आपकी आइडियाज है, आपको जब मन करे उसको लेके बैठो, दैट इज लाइक योर सीक्रेट बुक। आपको आइडिया आ गई, उसमें डाल दी, आपको कुछ अच्छे करने को मन करा है उसमें बना दो, दैट्स अ सीक्रेट बुक, यू कैन कीप इट लाइक दैट वे, यू कैन ऑर्गेनाइज योरसेल्फ। आपको खुद को ही ऑर्गेनाइज करना है। अगर मैं हूं तो मुझे चाहिए कि मैं एक छोटा पॉकेट साइज का स्केच बुक रखूं, जिसमें मैं सिर्फ आइडियाज बनाती जाऊं, और मेरे पास एक A3 साइज का स्केच बुक बड़ा रहे, स्पाइरल वाला, जिसके ऊपर मैं एक्चुअली अच्छे इलस्ट्रेशन बनाऊं, जो मैंने पॉकेट बुक में जो आइडियाज डाले हैं उसको लेके। सो दिस इज व्हाट माय आइडिया इज। सो यू हैव टू डिफाइन योर ओन आइडिया, ठीक है? Okay. Yeah. Okay. And also important thing you need to know is that drawing papers you get in sizes A1, A2, A3 and A4. ये 4 sizes में drawing paper आते हैं. So these are the types of paints we have actually seen it. Acrylics होता है, oil paint होता है, pastel होता है, water होता है, crayon होता है. ये बस अभी in general अभी आप इस दुनिया में आ गए हो, illustration, painting, so you should know these names. ये क्या होते हैं? And then there are different types of brushes.
जैसे यू सी दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रशेस हियर, जिसमें ये जो लॉन्ग वाले ब्रशेस है, ये ब्रशेस हम यूज करते हैं डिटेलिंग के लिए। इससे डिटेलिंग बहुत प्यारी आती है बिकॉज इट हैज गॉट अ पॉइंट। और ये जो फ्लैट ब्रश होते हैं ये हम यूज करते हैं पेंट कलर को ब्लेंड करने के लिए इक्वली। एक ही like we can blend the colors equal sections with using this flat brushes. And this is the angle brush. ये जो मेन ब्रशेस मैं आपको बता रही हूँ these are used by mostly the designers because ये एंगल ब्रश जो होता है ना, आप कोई अगर किसी आउटलाइन हो गारमेंट की आउटलाइन पे पेंट करने के लिए this helps you to paint the outline so the color doesn't go out of the dress. Are you clear on this brushes? बाकी के जो ब्रश है वो सारे आर्टिस्ट लोग यूज करते हैं मेनली, बट एज अ डिजाइनर्स वी नीड दिस राउंड ब्रश, वी नीड दिस फ्लैट ब्रश एंड वी कैन यूज दिस एंगल ब्रश ऑल्सो. ओके वृषाली, ये सब हमारे इसमें भी है, मतलब हमारे कोर्स में ये सब यूज होंगे क्या? हमारे कोर्स में इस लेवल पे नहीं होंगे, अगले वाले लेवल पे. अगेन आई विल से कि ये तो दो होने ही चाहिए आपके पास, पॉइंटेड एंड फ्लैट. ये स्लैंटिंग जो एंगल वाला है ये नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, हम इससे काम चला सकते हैं, बट दिस विल गिव यू द बेटर फिनिशिंग. जैसे हम अगर इलस्ट्रेशन करते हैं ड्रेस का कोई साइड है तो हम साइड में अगर पूरा फ्लैट ब्रश घुमाएंगे तो कलर बाहर चला जाएगा, बट अगर हम स्लैंट ब्रश यूज करेंगे तो वो अच्छे से बैठेगा, इट विल नॉट गो आउट. दैट्स द यूज. सो एक जैसे आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ये टाइप के ब्रशेस हमें मार्केट में मिलते हैं. सो एज अ इलस्ट्रेटर यू आर गोइंग टू प्ले विद कलर्स, यू शुड नो कि ये सारे ब्रशेस मार्केट में अवेलेबल होते हैं. मूविंग वो ऑन लास्ट वन, एक से लास्ट ब्रश किस चीज के लिए वृषाली? रिगर समथिंग इट्स रिटन, राइट? ये जो लॉन्ग, इसको बोलते हैं लॉन्ग हैंडल ब्रश. ये जो हम लोग ऑयल और एक्रेलिक पेंट मतलब जैसे बॉटल के ऊपर भी हम लोग पेंट करते हैं ना, काफी डिटेल में फाइन डिटेलिंग हम लोग डालते हैं. आप देखते हो ऐसे कोई कोई बॉटल्स डिजाइन की हुई होती है, उसमें बहुत छोटे छोटे डिटेलिंग्स होते हैं. वो इस ब्रश से किए जाते हैं. बिकॉज सी द पॉइंट, इसका पॉइंट देखो और इसका पॉइंट देखो, दिस इज द थिनेस्ट वन. इसीलिए मैंने पूछा. हाँ मतलब आपका ध्यान, आपका क्या बोलते हैं, यू आर मोर टूवर्ड्स इंक्लाइंड मोर टूवर्ड्स डिटेल्स. आपको शायद डिटेल्स की बहुत अच्छे से आदत है. आई थिंक दैट्स योर पॉइंट. करेक्ट. या so yeah, we got another last 5 minutes before the meeting ends. I'm going to explain you the drawing tips, and this is the end of anyways our session. The drawing tips में क्या है? Very important, practice regularly. You have to keep on practicing in order to get the results. और प्रैक्टिस करने में जैसे आप डेवलप में आपकी होगी ना, वो टाइम के साथ और बढ़ती जाएगी और अच्छा होगा. आज आपने शायद कुछ किया ठीक होगा, कल किया ओके होगा, परसों किया तो और अच्छा होगा. सो प्रैक्टिस इज समथिंग इज आंसर टू ऑल योर क्वेश्चंस. प्रैक्टिस, देन प्रैक्टिस एज ऑफन एज यू कैन. मतलब मेक इट अ हैबिट. इसको अपनी आदत बना दो. आप खाते हो, पीते हो, सोते हो, आपकी आदत है. कोई कोई बहुत बात करता है, कोई कोई कम बात करता है, वो आदत है. प्रैक्टिस अपनी एक आदत बना दो कि मुझे बस प्रैक्टिस करने के लिए बैठना है, इट इज माय हैबिट, मुझे उसके बगैर चैन नहीं पड़ता, मुझे प्रैक्टिस करनी है. ये अपने आप को, अपने दिमाग को वैसे ट्रेन करो, मुझे मुझे प्रैक्टिस करनी है, ये अपने दिमाग को ट्रेन करो. जितना आप हाथ घुमाओगे ना उतना आपका अच्छा स्केच होगा. एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, डोंट स्ट्रेस नहीं होना है. मुझसे नहीं हो रहा, मुझे नहीं करना, नो, डोंट डू दैट. अगर लग रहा है ऐसे, छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, फिर से आके बैठ जाओ, प्रैक्टिस करो. स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है. बिकॉज एवरी डिजाइनर गोज टू दिस मोड कि मुझे नहीं आ रहा, मैं पेन भी नहीं पकड़ पा रहा हूँ, मैं पेंसिल भी नहीं पकड़ पा रहा हूँ. ये सबके साथ होता है. ये प्रैक्टिस से सब कुछ अच्छा होता है. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, एज आई सेड, फोकस ऑन डेवलपिंग अ स्टाइल ऑफ योर ओन. अपना खुद का स्टाइल बनाने के लिए अभी से कोशिश करो, अभी से. कुछ भी आगे जाके आप डिजाइन बना रहे हो, अपना खुद का स्टाइल बनाओ. कैरी अ स्केचबुक विद यू एट ऑल द टाइम्स. हमेशा अपने साथ एक स्केचबुक रखो. फाइंड न्यू वेज टू इंस्पायर योरसेल्फ. खुद को हमेशा कुछ नए नए, खुद ही देखो आजू बाजू में किसको देख के आपको लग रहा है मैं इससे कुछ डिजाइन बना सकता हूँ या बना सकती हूँ. खुद ही अपने ढूंढो वेज
कि मैं कैसे कुछ नया कर सकती हूँ। यहाँ पे लिखा है ड्रॉ विद अ रेफरेंस। रेफरेंस मतलब क्या, सपोजिंग यू आप पिंटरेस्ट पे कुछ डिजाइन देखते हो और आप उसको दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग कि कॉपी करना भी एक टेक्निक होता है। कॉपी करना है ना आपको, ठीक है, आपको कुछ दिखा, आप उसको सेम बनाने की कोशिश करो, लेकिन उसको अपने परसेप्शन से देखो, उसको अपने नजरिया से देखो और फिर उसे बनाओ। एकदम सेम कॉपी करने की कभी कोशिश मत करना, उसको अपने तरीके से कॉपी करो। कॉपी करना इज गुड बट इन आवर ओन वे, एंड जिससे आपका खुद का एक आर्ट का स्टाइल डेवलप होता है। अपने रेफरेंस से कॉपी करो, रेफरेंस से चीजें बनाओ। ड्रॉ विदाउट अ रेफरेंस। विदाउट रेफरेंस मतलब किसी चीज को देख के ड्रॉ नहीं करना है, अपना इमेजिनेशन, अपने आइडियाज लगा के आपको ड्रॉ करना है। दैट इज हाउ यू डेवलप योर इमेजिनेशन स्किल। अंडरस्टैंडिंग एनाटॉमी मतलब एक बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो आपको ठीक से समझना है। हेड कहाँ पे आता है, शोल्डर कहाँ पे आता है, बस्ट कहाँ पे आता है, इसको बोलते हैं एनाटॉमी। क्रिएट फिगर्स इन मोशन मतलब कोई चल रहा है, कोई बैठा है, कोई पोजिंग लाइक दिस लाइक दैट, ऐसे मोशन में। मोशन मतलब चलना, मोशन एक लाइक एक आर्ट, एक ये होता है लाइक कोई चीज कर रहे हैं वैसे मोशन में क्रिएट करने की कोशिश करो फिगर्स। एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट मीडियाज। मीडियाज मतलब जैसे पोस्टर कलर, वाटर कलर, जो भी कितने सारे मीडियम्स अपने पास वी हैव अवेलेबल लाइक वैक्स एंड क्रेयॉन्स एंड स्टेडलर्स, उसके साथ एक्सपेरिमेंट करो। और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रैक्टिस विथ वेरियस हेयर स्टाइल्स एंड एक्सेसरीज। अलग अलग टाइप के हेयर स्टाइल बनाने की कोशिश करो, अलग अलग टाइप्स के एक्सेसरीज दो, तो जाके the overall illustration is going to stand out. That is the secret to the illustration. And now I really hope कि by the end of this session अभी आपको एक concept clear हुआ होगा illustration क्या है, मुझे illustration करने के लिए क्या चीजें चाहिए और मुझे illustration करने के लिए खुद को कैसे तैयार करना है, how you have to prepare yourself. So I want to see you in next session totally prepared कि मुझे अपना खुद का style तैयार करना है. वृशाली, वन डाउट. Yeah. एक्चुअली होता है कि अपने माइंड में ना कुछ होता है ऑलरेडी कि इसको ऐसे बनाना है, बट जैसे वो पेपर पे डालने चाहते हैं ना, वो ट्राई टू पुट इट ऑन द पेपर. वृशाली? Yeah, I'm listening. Tell me. Okay. We are thinking something like we'll draw like this, that we'll give this color. We get a rough sketch in our mind, right? And after some time, when we started putting it on the paper, it comes so worst. I think, I mean, not worst, but it's not exactly what we have thought. Why that happens? This happens because because you have, like, whoever is doing it, they have not taken the training how to do illustration. Once you get trained, once you understand, as I said, human anatomy, आप human anatomy समझोगे, then you'll start making the figure, right? Once you know the right figure, you have already learned in illustration a subject that collar कैसे बनाते हैं, sleeves कैसे बनाते हैं, skirt का flow कैसे दिखाते हैं, pleats कैसे बनाते हैं, gathers, flares, ये सारे कैसे बनाते हैं, ये अगर आप सीखते हो, so what will stop for your sketch not to stand? ये सब अगर आप पेपर पे अच्छे से कर पाओगे तो डेफिनेटली आपकी स्केच तो स्टैंड होनी है, उसके लिए चाहिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग. ओके विशाल, एक्चुअली ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है, इसीलिए. अभी नहीं होगा, अभी बस आप मुझे डेडिकेशन दो, मुझे आपका डेडिकेशन चाहिए. एक चीज अगर हम सीखने बैठे हैं तो मुझे आपका 100% अटेंशन चाहिए, आपका डेडिकेशन चाहिए कि मैं करूंगी, तो आप ये अच्छे से कर पाओगे. Yes, we are on the way, dear. We'll try our level best. Yes, and I'll try to correct you, don't worry. Yes, when we have such a beautiful teacher, then obviously the student can talk. Thank you. Lakshmi? Yes, ma'am. You have any question? No, ma'am. Are you sure? Yes, ma'am. Great, okay. So, before ending this session, I am giving you one assignment. Okay. आपको परसों दिखानी है मुझे. सबसे पहले we'll start with that. So what you have to do is, as I said, that you have to develop your own style, correct? आपको आपका खुद का स्टाइल बनाना है illustration का. वो अभी नहीं होगा,
वो अपने आप हो जाएगा। जैसे जैसे आप पेपर और पेन से और स्केचेस से और मीडियम, अलग अलग मीडियम, पोस्टर एंड ऑल से खेलने लगोगे, यू विल स्टार्ट प्लेइंग विद इट, यू विल ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड आपको ये स्टाइल में करना है। ठीक है, तो अभी उसके पहले व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू कम अप विद योर सिग्नेचर आइडियाज। सिग्नेचर क्या होता है? कोई भी अगर आप इलस्ट्रेशन बनाते हो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज उसके ऊपर आप उसके ऊपर अपना नाम लिखते हो। नाम लिखो या कुछ भी लोगों का डिजाइन ड्रॉ करो, दैट इज योर सिग्नेचर। कि आगे जाके एक 5 साल बाद भी मैं अगर आपका डिजाइन देखूं तो मुझे ये साइन देख के पता होना चाहिए कि ओ दिस इज बाय लक्ष्मी, दिस इज बाय सीमा जी। जैसे नाइकी का कैसे लोगो है, हर एक ब्रांड के अपने अपने लोगो है, वैसे आप आपका खुद का लोगो बनाओ। दिस इज द फर्स्ट स्टेप फॉर यू। Okay. Guys, please on your Fine. cameras. I can't see you actually, so it makes me a little uncomfortable. If you just could. Actually, yesterday, ma'am, actually, yesterday only I did my piercing. My face is Okay, not no good looking. problem. Lakshmi, for you, it's okay. Okay. So you have to come up with your signature. Um, for the next time, I will show you my signature style. Actually, I don't have it here. If I could share Ma'am, it, I can would you have. please explain me about that signature style? Actually, I don't get that point. So yeah, I'm telling you that signature style means, see, whenever you make any sketch, right? Now, Yeah, as we yeah. discussed that you have to develop your own identity. अपना अपना एक खुद का Yeah. identity आपको बनाना है, correct? So whenever Yes, I'll ma'am. see your sketch, I will see your sign there. Any sign. For example, your name is Lakshmi. What is your Yeah, last name, ma'am. Lakshmi? What's your last name? Shravanti, Lakshmi. Shravanti, right? What? Shravanti. Shravanti. So let's say Lakshmi S, okay? And I want to Okay. put it like Lakshmi S. So I will write it in a very beautiful form. I will just write Okay, okay, okay. LS or maybe Lakshmi S dot something which is Okay. gonna be like a design to me. I mean, ये आपको अपने Okay. लिए बनाना है, आपको मेरे लिए नहीं बनाना है। आपको आपका जो स्टाइल है वो अपने लिए बनाना है। आई विल अप्रूव इट। सो आपको मुझे तीन ऐसे ड्राइंग बना के, ड्राइंग नहीं, 3 सिग्नेचर ऐसे बना के देने हैं आपको कि विच आई वन ऑफ देम आई विल सिलेक्ट इट फॉर यू। आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू फाइंड आउट रेफरेंस फॉर यू। सो मैं आपको अच्छे से और बता सकती हूँ कि ये स्टाइल क्या होता है। हर एक, आप कोई भी इलस्ट्रेशन ले लो, उसके ऊपर एक डिजाइनर का नाम लिखा हुआ होता है। इट इज कॉल्ड योर जी. स्टाइल, सिग्नेचर स्टाइल। Wait, Okay, okay. I'll find something for you quickly. Yeah. Lakshmi, you're still not clear. What is it? Yes, ma'am. And clear, ma'am. बिकॉज अब तक आपने जो भी स्केचेस बनाए होंगे वो आपने से पेपर पे बनाए होंगे, उसके ऊपर अपना नाम भी नहीं डाला होगा। सो डोंट डू दैट। डू लाइक वट एवर स्केचेस यू मेक, अपना नाम डालो। आई हैड these students, they used to make beautiful sketches, but they always used to forget to write down their signature. Signature is your ownership. You're the owner of that sketch. Yes, ma'am. Yes, ma'am. और वो अभी से आपको करना है, अपने आप को एज अ ब्रांड खुद को अभी से आपको इंट्रोड्यूस करना है। Yes, ma'am. Yeah, take it like you are not some ordinary designer, you are some artist, you are some you are an art student, you are a proper practice designer. So I'll show you, there is Yeah. one example. I'm going to share the screen with you all. Yeah. Just a minute. It was a very beautiful, encouraging line, Vrishali. Ki we have a brand of our own. Yeah. We are not ordinary. जिंदगी में कुछ करने के लिए कुछ तो मोटो हो ना, अपने पास कुछ रीजन हो कुछ करने के लिए, तो उसका मजा ही कुछ और होता है। हमें एक डायरेक्शन मिल जाए ना तो हम और अच्छे से काम करते हैं। तो इसमें इलस्ट्रेशन में आपका वो मोटो होना चाहिए, मुझे अपना खुद का ब्रांड, मैं खुद ही एक ब्रांड हूँ, मैं खुद ही एक लोगो हूँ, बस उसको पेपर पे डालना है। आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन एंड आई विल शो यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट। Here you can see the red gown, lady is wearing a red gown, and baju mein there is one small signature. Yeah. So this is what called a signature. Even in this also there is something written here. This is a signature.
Every designer, Okay. they make the design, they put the signature. They make the design, they put the signature. Okay. कोई भी ले लो, इसमें जितने सारे सब में नाम लिखे हुए हैं. And they have their own style. This is different style. So basically designers have to have their own signatures. और मुझे चाहिए कि आप ऐसे मस्त अच्छे अच्छे, ये भी जो स्टाइल मैंने आपको दिखाया था, इसमें भी ये सिग्नेचर था. Yes. Yeah. Get it? Nothing is complete without signature. Yeah. स्टाइल देखो, हर एक के अलग अलग स्टाइल है. आप चाहिए तो इंटरनेट पे और ब्राउज करो क्या क्या अलग अलग स्टाइल्स है. बट मुझे ना आपसे एक सिग्नेचर स्टाइल मुझे आपका फाइनल करना है. मुझे आप 3 स्टाइल बताओगे सिग्नेचर के, मैं उसमें से एक फाइनल करूंगी. जो भी आप इलस्ट्रेशन बनाओगे उस पर आपका सिग्नेचर मुझे दिखना चाहिए. आई कैन गारंटी यू 5 साल के बाद अगर आपने ये सेम पैशन रखा ना, 5 साल के बाद आपके इलस्ट्रेशन हिट हो जाएंगे. और वो सिग्नेचर देख के आई विल आइडेंटिफाई शी वाज माय स्टूडेंट वंस अपॉन अ टाइम. Okay. Okay, dear. Sure. Okay. So Yeah. by this saying, this is the end of the session and we are meeting on Wednesday 3:30 to 5:30. Please be on time. आज मैंने compromise Okay, किया. Wednesday को no compromise on time. We are going to start sharp at 3:30 because ये फिर ऐसे time lag हो जाता है. Lakshmi, don't Okay, forget, okay? No, ma'am. No, ma'am. So it was nice meeting you all. सीमा जी, आपको भी मिलके अच्छा लगा. आप काफी इंथुसियास्टिक लग रहे हो. मुझे बहुत अच्छा लगा आपको देख के. आपका जो ये पैशन दिख रहा है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा. मुझे वेरी नाइस. आई एम वेरी Thank you. Thank you. Thank you. Lakshmi, I Thank would you so like much. to see you. Yes, ma'am. Thank you so much. Nice meeting you, ma'am. Yes. Thank you, Vrishati, for spending time with us and giving such a valuable information. Thank you so much. My pleasure. My pleasure. Bye bye, guys.